Hello and welcome to News Tonight on Rajya Sabha TV. I'm Tina Jha. Let's get started with the headlines. Prime Minister Modi holds bilateral talks with his Portuguese counterpart Antonio Costa. Both leaders agreed to strengthen relations in defence, science and technology and trade. The 79th Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies concludes in Dehradun. Lok Sabha Speaker Om Birla says neutrality of presiding officers essential, asserts legislature playing a key role in strengthening democracy. Finance Minister Nirbhaya holds pre-budget consultations with representatives of trade unions and labour organisations, focus on job creation, labour concerns and quality of employment issues. Delhi High Court rejects Nirbhaya convict Pawan Kumar Gupta's claim of juvenility, imposes 25,000 rupees fine on his lawyer for filing false documents, asks Bar Council of Delhi to take necessary action. And the fifth and final phase of voting in Jharkhand tomorrow. 237 candidates in the fray across 16 seats in the Santhal Pargana division. Results to be announced on 23rd December. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Portuguese counterpart Antonio Costa in New Delhi on Thursday. Both leaders discussed broader roadmap for strengthening bilateral relations in areas such as defence, science and technology and trade. The Portuguese Prime Minister is visiting India on Prime Minister Modi's invitation to attend the second meeting of the organising committee for the celebrations of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Prime Minister thanked him first to be associated with this important occasion for us, for all of us. Among the issues, the trade and investment, I think, was discussed, and especially in the context of Make in India, Prime Minister did mention to Prime Minister Costa the opportunities which are available in India in different sectors, and he urged the Portuguese companies that they should make use of the opportunities available in India, including cheap labor, to come and invest in India. There was no agreement. It's a working visit. It was not a full bilateral visit. The purpose of the visit was to attend the organizing committee meeting to celebrate, the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Home Minister Amit Shah said on Thursday that the government is considering to evolve a leave system to ensure that the Central Armed Police Forces jawans get at least 100 days every year. Speaking on the occasion of the 56th Foundation Day of the Sashastra Seema Bal, the Home Minister said the SSB's contribution to the unity and integrity of India is extremely crucial. Recalling the border forces who laid their lives at stake while fighting against enemies, Amit Shah said that the nation salutes their supreme sacrifice. He also appreciated the programs run by the Sashastra Seema Bal for the citizens residing in the border areas and said it shows their human face. गृह मंत्रालय ने ढेर सारी सुविधाएं बढ़ाने का भी काम किया है। कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 57 से बढ़ाकर 60 कर दिया और लगभग 78,143 कर्मियों को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह मंत्रालय ये सुनिश्चित करने में लगा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1-1.5 साल की अवधि में हम ये स्थिति ला देंगे
कि सीमा सुरक्षा बल का हर एक जवान जो सीमा पर सीमा की सुरक्षा करता है वो कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रह सके। भारत नेपाल और भारत भूटान की लगभग 2450 किलोमीटर की खुली सीमा का रक्षा का जिम्मा एसएसबी के ऊपर है। वैसे तो ये दोनों राष्ट्र हमारे मित्र राष्ट्र हैं, कोई और प्रकार के खतरे नहीं है, मगर आज जिस प्रकार का आवागमन विश्व के अंदर सरल हुआ है, विश्व दूरी की दृष्टि से छोटा हुआ है, तो ये सीमाओं का उपयोग भी काफी लोग, काफी देश जो भारत के अंदर शांति देखना नहीं चाहते वो करते हैं और वहां से भी अंदर आने का प्रयास हो रहा है। Lok Sabha Speaker Om Birla has stressed on the neutrality of presiding officers in legislatures. Speaking at the valedictory session of the 79th Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies in Dehradun, the Lok Sabha Speaker said the presiding officers in legislatures should make impartial decisions on defections in a time-bound manner which could not be questioned by the judiciary. हमने लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का कैसे सामना किया जा सकता है और कैसे संसदीय विधायी कामकाज को हम बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हमने चर्चा की। दो विषय महत्वपूर्ण थे, लेकिन शून्यकाल हर सदन में होता है। हमारी सम्मेलन में भी शून्यकाल में भी व्यापक चर्चा हुई। सभी प्रीसिडिंग अधिकारियों का मत था कि हम अपनी अपनी विधानसभाओं में इस शून्यकाल को प्रभावी बनाएं ताकि अधिकाधिक माननीय सदस्यों को। And the Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh, has suggested evolving a disruption index as a measure to monitor disruptions in legislatures and also check indiscipline. He added that the disruption index would lead to availability of more time for debate and discussion on issues before the House. The Deputy Chairman made this suggestion during a session 0 hour at the two-day Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies in Dehradun. He said such meetings give an opportunity to discuss important issues and challenges related to the parliamentary system. My colleague Arvind Singh caught up with the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. Let's listen in. सर, ये जो सम्मेलन है, आपको इसको किस लिहाज से देखते हैं? आज के संदर्भ में जिस तरह की चुनौतियां हैं पीठासीन अधिकारियों के समक्ष, उसको लेकर के जो चर्चाएं हुई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है सर आप? मुझे लगता है ये बड़ा एक बेहतर प्रयास है जिसका समृद्ध अतीत रहा है अरविंद जी। और जैसा मैंने आज पाया कि यह फोरम बहुत ही प्रासंगिक है कि इसमें अनेक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है, यानी जो हमारी विधानसभाओं में, विधानमंडलों में या संसद में जिस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और जहां बेस्ट प्रैक्टिसेज हो रही हैं, उनके आदान प्रदान का यह मंच बड़ा उपयोगी है। मैं इस रूप में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आज लगभग 70 वर्षों बाद, आफ्टर 7 डिकेड्स, हम इस बात पे गौरव करते हैं कि हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत किया है लगातार। पर लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे सशक्त और बिल्कुल स्पष्ट माध्यम या प्रतीक तो हमारी ये संसदीय संस्थाएं ही है ना, जिनको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, चाहे वो संसद हो या विधानमंडल हो। विधानमंडल में दोनों विधानसभा और विधान परिषद जहां जहां है, संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों है। जो देश के मौजूदा हालात और देश के भविष्य के लिए जहां नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, जहां सरकार के बजट पर सरकार के माध्यम से कामकाज पर नियंत्रण रखने की कोशिश होती है, और भारत के लोगों के सपनों को, भारत के लोगों की आकांक्षाओं को या तो राज्य में ये पार्लियामेंट्री फोरम्स या केंद्र में हमारी संसद, यही आवाज मिलता है ना। तो अंततः आप देखेंगे कि
70 वर्षों में हमने अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहुत मजबूत बनाया, पर साथ साथ चैलेंजेस भी बड़े सीरियस ढंग से रहे। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनकर आया, पर पिछले 2 सत्रों से, हमारा 250वां यह सत्र था, उसके पहले 249, इसमें जो कामकाज की प्रगति और उल्लेखनीय इसमें जो बदलाव हुआ है, 114%, 15% काम होना, इस ढंग से आप देखें, और प्रश्नकाल अच्छी तरह चलना, शून्यकाल अच्छी तरह चलना, इस तरह से जो स्पेशल मेंशंस हैं उनमें सारी चीजों का उठना, यानी हाउस का बेहतर ढंग से फंक्शनल होना। And Rajya Sabha Secretary General Deshdeepak Verma also attended the two-day conference of presiding officers of legislative bodies in Dehradun. He too spoke to Rajya Sabha TV's Arvind Singh about the importance of this conference. ये जो कॉन्फ्रेंस सचिवों की और पीठासीन अधिकारियों की जो एक बैठक हर वर्ष होती रही है कई वर्षों से, उसका एक बड़ा महत्व ये है कि जो विभिन्न हमारी जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, और हमारी खुद की जो लोकसभा और राज्यसभा है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के लिए एक तरीके से टेक अवे बन सकती हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। और सामान्य रूप से जो हमारा कार्य चलता है उसमें कभी ये समय नहीं मिल पाता कि सब आपस में एक दूसरे की प्रक्रियाओं के बारे में जाने। तो इस तरह के सम्मेलनों का सचिवों स्तर के पर और पीठासीन अधिकारियों के स्तर पर उसका एक बहुत बड़ा उपयोग ये है कि एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानने को मिलता है, और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया सकता है कि इसमें से कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और उस बैठक में जो मुद्दा हमने उठाया था वो ये था कि जो हमारी एक्सपेंशन की जो प्रक्रिया है, एक्सपंज करने की, वो प्रक्रिया कुछ इस तरह से बनी हुई है जिसमें कई बार आप किन्हीं वह शब्दों को अनपार्लियामेंट्री मानते हुए, क्योंकि अनपार्लियामेंट्री शब्दों का एक कोश है, उस कोश के आधार पे शब्द या फ्रेज को असंसदीय घोषित करके और उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। इसका परिणाम होता है कि कई बार जो शब्द निकाल दिए गए और जो फ्रेज निकाल दिए गए, उससे फिर बचे हुए शब्दों का और बचे हुए वाक्यों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और इसलिए ये एक तरीके से जो, क्योंकि आज के ज़माने में ये जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको लोग पढ़ते हैं, वो हमेशा रिकॉर्ड में रखा जाता है, आने वाले कई सालों तक उसको देखा जाएगा, और उसमें अगर वो शब्द निकले हुए हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि पहले के समय में मीडिया और सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं थे। आज बहुत सारी चर्चाएं जो पार्लियामेंट में हो रही हैं वो बाहर मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है उसके बारे में। तो जब वो चर्चा हो रही है तो असंसदीय कह करके शब्दों को निकालने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको ये देखना पड़ेगा कि ये प्रजातंत्र की मूल भावना को गला न घोंट दे, लोगों को बोलने का या जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने में कोई बाधा भी ना आवे, और दूसरा जब वो प्रोसीडिंग्स पब्लिश हों तो लोग उसको समझ सकें। तो मैंने ये सुझाव दिया है कि जो शब्द या जो वाक्य हाउस के डिबेट के दौरान लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, अगर उसमें कोई कठोर शब्द है जिसको हम अनपार्लियामेंट्री कहते हैं, अगर कठोर शब्द है तो हम उस कठोर शब्द की जगह पे कोई सरल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वैकल्पिक शब्दावली, हल्की शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक एस्टेरिस्क लगा करके नीचे कह सकते हैं कि हमने इसको सोबर डाउन कर दिया है, हमने इसको एक भाषा इसकी सरल कर दी है। President Ramnath Kovind chaired the National Committee for Commemoration of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi at the Rashtrapati Bhavan on Thursday. Speaking on the occasion, the President lauded the efforts of Prime Minister Narendra Modi for providing personal leadership to initiatives like the Swachh Bharat Abhiyan and also spreading Bapu's teachings for protecting the environment through various initiatives. At the event, Prime Minister Modi said, all citizens need to imbibe Gandhian thought and their vision in their lives.
He added that it is the responsibility of every citizen to keep reminding the world of the abiding relevance of Mahatma and his vision. Time for a very short break here, but more news and updates will continue on the other side. Do stay with us. Welcome back. You're watching News Tonight on Rajya Sabha TV. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday held pre-budget consultations with trade unions and labour organisations. During the meeting, the main areas of discussion included skilling, reskilling and upskilling of existing labour force. The representatives of the business organizations shared their views and suggestions regarding labour and employment issues. Several other issues regarding quality of job creation and ensuring minimum wages of workers were also discussed. Several senior officials, including Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Anurag Singh Thakur, were also present in the meeting. The Delhi High Court has dismissed the plea of one of the 4 convicts facing death penalty in the Nirbhaya case. The High Court has rejected convict Pawan Kumar Gupta's claim that he was a juvenile at the time of the offence in December 2012. The court said the convict's plea was not maintainable and it was filed to delay and drag the matter so that the execution of death sentence does not take place in the near future. The High Court also imposed a fine of 25,000 rupees on his advocate AP Singh for filing false documents regarding the convict's age and not appearing in court as well. The court further directed the amount to be deposited within 1 week in favour of Nirmal Chhaya for the welfare of destitute women and children. The High Court also asked the Bar Council of Delhi to take action against the advocate for filing a forged affidavit. Amid the ongoing protests against the Citizenship Amendment Act, the Delhi Police on Thursday addressed a press conference. Delhi Police PRO Mandeep Randhawa informed that Section 144 has been imposed in few areas in Delhi as a precautionary measure. He also appealed to the people to maintain peace and requested them not to believe and also spread rumours. Mandeep Randhawa also sought cooperation from the people in maintaining law and order in the national capital. इसी तरह शांति बनाए रखें और कोई भी अगर र्यूमर आता है तो आप प्लीज उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि अभी पुराने र्यूमर्स मैं पहले भी शेयर कर चुका था. अभी भी एक सीलमपुर का र्यूमर था जिसमें एक जो प्रोटेस्टर्स है कोई चीज फेंक रहा है, उसके बाद में हाथ में बर्न इंजरी हो जाती है. उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको भी अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि प्रोटेस्टर्स जो है कई जगह पे वायलेंट हो रहे हैं और पुलिस पे अटैक्स कर रहे हैं. और वो क्लिपिंग भी आपके पास मीडिया में अवेलेबल है. तो आपके माध्यम से फिर मैं दिल्ली वासियों को यही अपील करना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें, दिल्ली पुलिस का सहयोग करें, किसी बहकावे में मत आएं और दिल्ली पुलिस फुली प्रिपेयर्ड है. हम फुली प्रिपेयर्ड है शांति बनाए रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. Meanwhile, UP Chief Minister Yogi Adityanath has said that those who indulge in violence across the state are being identified and strict action against them will be taken. The Chief Minister said that no anti-social element will be tolerated and also appealed to the people to avoid rumours and also maintain peace in the state. नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हिंसा, इस सरासर उपद्रवी और अराजक तत्वों के द्वारा विपक्षी दलों, कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के संरक्षण में की गई एक शरारत है. और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में और संभल में जिस प्रकार से वाहनों में आग लगा करके आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा. And in some other news, voting for the 5th and final phase of assembly elections in Jharkhand will be held on Friday. Preparations for the final phase have already been completed. 237 candidates are in the fray for 16 seats spread over 6 districts, out of which 29 candidates are women. Jarmundi seat has the highest number with 26 candidates, while the Podai Hart seat has the lowest with 8 candidates.
The counting of votes will take place on 23rd December. India and the United States on Wednesday discussed a range of strategic and security issues, including the use of terrorism as statecraft, as they held their second 2+2 dialogue in Washington. The dialogue was held at the Foggy Bottom headquarters of the State Department. U.S. Secretary of State Mike Pompeo, along with Defense Secretary Mark Esper, hosted their Indian counterparts, External Affairs Minister S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh, for the highest-level dialogue between the two countries. The two sides signed an industrial security agreement that will allow the transfer of defense technology. And after the talks, Defense Minister Rajnath Singh said the US and India have a common vision of a free, seamless and peaceful Indo-Pacific region. On the defense industry side, I spelled out my priorities to take this partnership beyond the acquisition of platforms and equipment to significant transfer of defense technology and increased investment by US defense companies in India under the Make in India program. We have also identified priority program which can be selected and executed under the DTTI program. We have also identified a standard operating procedure for this process. External Affairs Minister S. Jaishankar said in recent months, we've seen 5 ministerial dialogues between the two countries, reflective of the intense bilateral engagement. Among the key issues that we discussed today was the Indo-Pacific, including ways to leverage our respective strengths to benefit not just our two countries, but the entire region. Our cooperation is aimed at advancing a free, open, inclusive, peaceful and prosperous Indo-Pacific. Our counter-terrorism effort was also discussed at today's meeting, and these have been boosted by a growing consensus on the nature of terror threats in the region and the dangers of cross-border terrorism and sanctuaries. U.S. Secretary of State Mike Pompeo said both nations secured new agreements on space exploration, defense and industrial collaboration, while U.S. Defense Secretary Mark Esper said the United States is working with India on a fair and reciprocal trade deal. We agreed to establish a new exchange program for legislators from our two countries. We launched new initiatives to help secure internships for innovators in each of our two countries. And we're excited to support India's Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Elsewhere in the bilateral relationship, Ambassador Lighthizer is working hard with his Indian counterpart on a fair and reciprocal trade deal. Today, we are proud to conclude the Industrial Security Annex, which will facilitate collaboration between our defense industries by supporting the secure transfer of key information and technology. We also finalized 3 agreements under the Defense, Technology and Trade Initiative, which will enhance our ability to co-produce and co-develop critical technologies. Rajnath Singh and S. Jaishankar also held separate meetings with their American counterparts. The first 2+2 dialogue between India and the US was held in September last year in New Delhi. And Donald Trump has become the 3rd US president in history to be impeached by the House of Representatives, setting up a trial in the Senate that will decide whether he remains in office. The House voted on 2 charges: that the president had abused his power and that he had obstructed Congress. Nearly all Democrats voted for the charges and every Republican against. So this now sets up a trial in the Senate that will decide whether Trump remains in office. However, President Trump's Republicans control the Senate, so it is highly unlikely that he will be removed from power. And let's now talk about environment and climate change. As the temperature of the earth rises, diseases are also changing their geographical boundaries. Mosquitoes and other carrier organisms that transmit many infectious diseases, including malaria, dengue, fever, chikungunya,
remained out of the economically developed and cooler countries. With shifting temperature belts, climate change is tipping the scales in the other direction. Warmer temperatures increase transmission of vector-borne diseases. Most of the affected are pregnant women and children. Climate change also helps waterborne pathogens like bacteria, viruses, and protozoa flourish in warmer waters and also endanger human health. And that's it from us in this bulletin. Thank you for your time.